Good evening, guys. How are you? Beta Joya, Yes. I have one question. What? The question is, which is your favorite place in all over world? My favorite place is Dubai. Uh, I know and listen about Dubai. Dubai has very big buildings, and I want to go to Dubai because I have to see Burj Khalifa. Burj Khalifa is very tall building in the world. Uh, and it's my aim to go to Burj Khalifa in Dubai. And I think in Dubai there is one golden market, and we can purchase the gold in a Yeah. very cheap. Is that correct? Yes, because in Dubai there is king, not government, so there is no taxes. There is no taxes. That's why the gold is cheap. Yes. And we can get, I think, 20 gram gold, and Yeah. we can take to India. Yes. Okay, okay. And Beta Chikra, Yes. which is your favorite play? मतलब game. Game. Yes. My favorite game is Kho. And in this there are so many people and there are two teams. And we have to run and touch everyone. And then we have to run fast. And it is my favorite game. Okay, okay. And beta, which is your, who is your favorite poet? Kavi. Salahuddin is my favorite poet. Okay, okay. And I think sometime before you went to Clark Place. Yeah. And what did you see? I think you have seen the movie Three Idiots. Yes. No, Three Idiots. No, I think you had seen the Beer Jara. How Yeah, was the yeah. Beer Jara movie? This is absolutely very good. I like that movie because my favorite hero Shah Rukh Khan is there in movie, and it is totally based on a good movie. Okay, okay. And Beta Jikra, I think you have a one cube. Can you tell me something about cube? Yes, cube is a playing gadget, and it have 8 corners, and it is a rainbow type. Its color is rainbow, and it is in square type. Okay, beta, okay. And can you tell me one starter? I mean, suppose that I would like to tell you, and I'm going to talk you, and let me tell you this type. Tell me one starter. Uh, from my point of view. From my point of view, वाह वेरी गुड. फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि मेरे नज़रिए से या मेरे हिसाब से इसको हम एक चीज़ कहते हैं, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू भी कह सकते हैं. Yes. यस, इट्स करेक्ट. Yeah. Okay, beta. And beta, Joya, verb is a very most important Yes. in English. That's why I want to ask you one verb, and one verb fifth verb. Okay. It's starved, starving, starved. You mean starve means होता है भूखा रहना. It's a correct. एंड सेकंड फार्म ईडी लगा देंगे तो स्टार हो जाएगा, और थर्ड फार्म में भी हम ईडी लगा के बना देंगे, और चौथी फार्म जैसा कि सब जानते हैं आईएनजी लगा के बनेगा, और पांचवें फार्म में जैसे ये लगा करके हम बना देते हैं. एंड बेटा, टुडे आई वुड लाइक टू टेल यू, आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि पापा कहाँ गए थे. पापा वेंट टू द कमला मार्केट विथ टू फ्रेंड्स, एंड आई वेंट, आई थिंक, द शोरूम ऑफ Decathlon. Decathlon showroom is a very well, and it is known for, यानी कि खेलने वाले सामान बेचने के लिए जाना जाता है. एंड माई फ्रेंड परचेज वन बैट एंड वन बॉल एंड सम टी शर्ट्स एंड ट्राउजर्स एंड एज वेल एज a lots of gadgets he purchased, and I think around 15,000 he spends, यानी वो खर्चा करता है कितना, 15,000 के आसपास. एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू द मुखर्जी नगर नियर अक्रोवाल शॉप, एंड आई एट स्वीट्स. वहाँ पे हमने मतलब मिठाई खाया था, और मिठाई में क्या खाया था ना, घेवर. डू यू नो अबाउट घेवर? No, I don't know. घेवर इज ऐसे होता है, ऐसे ना वो खोए का उसके वजह से छतरी जैसा ऐसे रहता है ना, ऐसे. तो घेवर बहुत अच्छी स्वीट होती है बेटा. I think it is made of jaggery. जैगरी, व्हाट इज द मीन जैगरी? आई डोंट नो. It means good. गुड़. It is made of good. या इट इज मेड ऑफ गुड़ एंड इट इज मेड ऑफ शुगर. बट ऐसे जाली जाली जैसे होता है ना, कि शहद का छत्ता होता है ना, इस तरीके से ये होता है.
and after that I went to the model town and then I returned my office. Do you know where is my office? My office is in Lajpat Nagar. Lajpat. Yeah, and real estate. We are three partners and we are doing the business of real estate and we are earning lots of money. I think 2 lakh, 3 lakh per Daddy, month. Yes. but your office was in Subhanpur. Yes, yes. There is also one my office in Subhanpur, but Subhanpur office is a small office and a large office in Lajpat Nagar. Daddy, Okay. I have one question. Yes. We consider as dhokla. Dhokla is a sweet, but dhokla is means it is tikha. So the meaning of a sweet is meetha pan. Then how we say that dhokla is a sweet? Yeah. Dhokla it's a sweet, but dhokla is not tikha. Do you know? There a mobile is ringing and please silent that mobile because it is disturbing us. Okay. And कृपया मोबाइल को इधर ले आओ बेटा. And who is on the calling? Sunita Dadi. Sunita Dadi. Okay. We will talk after some time. No, give this mobile at your to your mom. Okay. No, I think it's not important. We will talk after some time. Okay. And beta Jikra, I have another question. Yes. Suppose that you are in class place Yes. and with your parents, Yes. and your parents suppose that is opposite side and you are this side, and तुम्हारे मम्मी पापा उधर हो जाते हैं, खो जाते हैं, और आप इधर जो है खो जाती हो, Yes. तो what will you do? Okay, first I will find them, and if I don't find them, then I catch someone and I say to that call my parents and I tell them the number, and then I talk to my parents and then said I am at the Suppose that you don't have a knowledge about telephone number, yes. then what will you do? Then I will go to a police station or any shop, Okay. and then I will You will tell the whole address that I am missing and my parents are not getting me, मतलब मुझे नहीं मिल रहे हैं, that's Yes. why I want to go. Then he will ask you, फिर वो आपसे पूछेंगे where do you live, then you will tell that I am living in Lajpat Nagar and it's my address. okay. Okay. Yeah. And beta Joya, suppose that you have a pen Yeah, I have pen. and you are going to give the exam Yeah. and your pen is lost in that time, उस समय आपकी कलम खो जाती है, that time what will you do? First, I asked to my friend that please give me pen. Then they will not give me pen, so I consider to teacher that I have no pen. Please give me pen. Then she will give me and I do my exam. Okay, very good beta. And how are you feeling that you are speaking English? आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है जो आप अंग्रेजी में I बात कर रहे feel good and I feel proud on me that I am speaking. हो? And do you have a knowledge about tenses and passive voice and narration? Do you have a knowledge? Yes, yeah. I have a knowledge. Okay. And a causative verb also. Yes. And I think main verb and preposition, conjunction, I mean parts of speech, everything. Do you have a knowledge? Yes. Yes. Okay, we will discuss next time about it. I mean parts of speech, and I think for today it's enough. Okay. Okay. And after that, I think around 15 minutes we will Daddy? go to sleep. Yes. Today you have not said any shairi. Yeah, शायरी. Yes. शायरी देखो बेटा, शायरी एक आमिर खान की शायरी है, बहुत तगड़ी शायरी है. Yes. बंदे हैं हम उसके, किसके? बंदे हैं हम उसके मतलब ऊपर वाले के, खुदा के. हम पे किसका जोर, हम पे किसी का जोर नहीं है. बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर. उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर. इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम. बेटा हाउ द शायरी. ये शायरी बेटा बहुत तगड़ी है. कभी किसी पे भरोसा मत करो, ऊपर वाला है, सबको रोजी देता है. हम लोग वी हार्ड वर्क, हम कठिन मेहनत करेंगे और कठिन मेहनत करके हम
कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, ढेर सारे पैसा कमा सकते हैं और हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। Yes. ओके बेटा, तो दिस टाइप यू विल हार्ड वर्क। अब एक चीज और मेरा सवाल है, आई हैव वन क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पावरफुल वेपन इन ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड? It दुनिया का is- सबसे पावरफुल हथियार या वो चीज क्या है? It is education. या योर क्वेश्चन इज, योर आंसर ये 100% करेक्ट, बिकॉज इफ यू हैव a knowledge, great knowledge, a lot of knowledge, then you can become scientist, Yes. then you can become IAS, IPS, then you can become a CEO, a lot of big companies. तो आप इस तरीके से ढेर सारी चीजों के कर सकते हो। और फिर जब आप CEO हो, साइंटिस्ट हो, तो आपके पास पैसों की कमी है। तो ये दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार क्या है? एजुकेशन। और एजुकेशन कैसे आती है? Hard work. हार्ड वर्क। सबसे पहले जो बच्चा खुद से पढ़ता है बगैर कहे, उसी को एजुकेशन आएगा। ठीक है, Okay. तो जितने भी पेरेंट्स लोग हैं, बच्चे हैं, सब लोगों को मैं अपनी तरफ से सजेशन देना चाहता हूँ कि खुद से पढ़ना लिखना मेहनत करना सीखें। जब आप खुद से पढ़ेंगे तो आप ऑटोमेटिक अपने एम को अचीव कर लेंगे। ओके बेटा, सो गाइस, मिलेंगे कल के वीडियो में, कल दूसरे वीडियो में। और वो वीडियो जो कल का दूसरा वीडियो रहेगा वो तगड़ा वीडियो रहेगा। और फिलहाल में आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, Bye bye. थैंक यू, Thank you. Bye. गुड नाइट।